Let's look at lesson 3, Ranga's marriage. So dear students, the lecture for the day is lesson 3 of Snapshots, Ranga's marriage. Now again we have to start with the same process. Just look at type. So why is lesson number 3 of Snapshot titled as Ranga's marriage? Just look at the details of it. So I think before starting every chapter, we have done this particular concept. So I think you are crystal clear about this particular point we are going to discuss very early. So why the chapter is titled as Ranga's marriage? So the basic reason for this particular point is the whole story centers around getting young man Ranga married. So the entire story is based upon the basic point of Ranga's village boy. Marriage was taken into consideration from the beginning to end. So that is why we are able to announce this particular point. That title of this story is 100% accurate. तो बेटा टाइटल इस स्टोरी का अगर देखा जाए रंगास मैरिज क्यों है, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एक विलेज में रहने वाला लड़का है जिसका नाम है रंगा। तो उसकी मैरिज के बारे में बिगिनिंग पॉइंट से लेके एंड तक स्टोरी इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. So we are able to announce this particular point in a very confident way that title of this particular chapter is 100% accurate, appropriate. So I think crystal clear about this particular point. So now look at the next. First concept, the first basic point of the chapter, I think it is crystal clear. Now go for the second point. We look at second point. Before starting, we have to look at the writer, the narrator. So this particular chapter is written by South Indian writer. Name is Musti Venkatesha Iyengar. So this particular chapter is written by Musti Venkatesha Iyengar. So just look at the brief details of this particular writer. So Musti Venkatesha Iyengar was born on 6 June 1891 and he died on 6 June 1986. He was a well-known writer in Kannada language. He was the fourth among Kannada writers to be honored with the very fine award. The name of award was Jananpit and is the highest literary honor conferred in India. जो literary level का highest award है, he was honored with that. So he was South Indian. We are able to look at this particular point. He is very fine writer and he was just offered very fine award, very prestigious award. I think brief detail of this particular writer is crystal clear. Now just look at the next point. We look at the third point, that is introductory part of this particular chapter. Now third point we have to look is theme.
if we look at theme of this particular story, basic story, the very fine theme, that is a conflict between tradition and modernity. So this particular story is very with very fine theme, and the theme of this particular story is conflict between tradition and modernity. We look at this particular point in little bit detail. So Ranga's marriage is a conflict between traditional and modern thought, and it is shown in the form of acceptance of arranged marriage. Also, this particular story highlights one more theme. If we look at the second theme, point of child marriage. If we just peep deep into the ancient part of our history, we are able to recognize the fact of child marriage. So I think theme of this particular chapter is crystal clear. Number one, that is main theme, that is conflict between tradition and modern. So if we look at the second theme, that is just highlighting the point of child marriage. I think this point is crystal clear so far as theme of this particular story is concerned. You are 100% clear about it. Oh, now look at the next step. So also part of introduction so far as intro of this particular chapter is concerned. And if we look at the fourth point, we have to look at the characters of this particular story. So if we look at the characters, one is Ranga. We look at the full name of this particular guy, Rangappa. So if we, he's son of the village accountant. तो फर्स्ट कैरेक्टर हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसमें हम रंगा के बारे में, कंप्लीट नेम ऑफ दैट फेलो was Rangappa, was son of the village accountant. We look at second character of this story, Shyama. We look at the brief intro of this particular person, the writer of this particular story, and he lives in Hosahli village. This village में रंगा जी रहते थे, उसी में ये रहते थे श्यामा. ये नरेटर या राइटर है इस स्टोरी के. Now just look at the third character of this story, that is Ratna. We look at this character. So she is Rama Rao's niece, and her age is just 11 years. And if we look at fourth character of this particular story, it is Shastri. And if we look at the brief point to introduce this particular personality, an astrologer. So now just look at the fifth character of this story, Gandabhata. Gundabhata was doctor. So there are five characters in this particular story. One is Ranga, second is Shama, third is Ratna, and fourth Shastriji, and fifth Gandabhata. I think crystal clear about this. So time to just look at this particular story in nutshell. So bete, now it is your moral responsibility to open your books. Pencils must be in your hands.
consider it your serious moral responsibility to write meaning of the words. If you consider that that particular word is difficult or hard, so just start with the things. Open your books on page number 16. I think everybody must have opened the book. Now let us start this particular story in nutshell. So just look at the upper part of uh, this particular page, that is page number 16. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? Look at the brief point of this particular story. We look at the beginning line. So already uh, in our intro part we have done that Ranga, accountant's son. So we are able to look at this particular character because Ranga is the main character in this story. So one of the rare breed. ब्रीड बेटा होता है टाइप, रेयर होता है बहुत कम, in very less numbers among the village folk. folk होता है FOLK people. तो यहाँ पे just look at this particular line. Ranga was accountant son, belonged to one of the very fine type of family who was able to get chance to just go to Bangalore for his studies. ये रेयर ब्रीड वर्ड क्यों यूज किया गया बेटा? क्योंकि विलेज में लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए एग्री नहीं होते और बहुत कम फैमिलीज थी, so that is why rare breed word is used. So rare, I think you are crystal clear. Breed, you are crystal clear. तो ये बच्चा जो था इसको चांस मिला कहाँ जाने का? बैंगलोर जाने का एजुकेशन के लिए. So who has been to the city to pursue his studies? और pursue होता है, you have to look at this follow, यानी अपनी स्टडी को करने के लिए उसको चांस मिला कहाँ जाने का? बैंगलोर. कितना टाइम पीरियड? यू विल स्टडी about it while you study the story. So you have to look at for 6 months he had been to Bangalore for his education because he belonged to educated family. उनके पापा जो थे वो अकाउंटेंट थे. So I think crystal clear about this particular fact of this story. लेकिन अब विलेज का इन्वायरमेंट ऐसा ही होता है. अब जब वो वापिस आता है, जब वो पढ़ाई करके 6 मंथ्स की एजुकेशन वहां से लेके जब while he returned back, तो क्या होता है? The crowds mill around his house. मिल वर्ड का मीनिंग पहले लिख लीजिए. मिल basically you have to look at this particular point. We have to look at the things while the people collect together, यानी कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इसके लिए मिल वर्ड यूज किया गया है. यू हैव टू लुक एट. तो उनके घर के बाहर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी देखने के लिए कि है ये अकाउंटेंट का जो बेटा था बैंगलोर गया था एजुकेशन पूरी करके, जितना भी उसका टाइम पीरियड के लिए उसने जाना था वो वापस आ चुका है. तो वहाँ गांव के लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए जानकारी रखने के लिए they are just crazy to look at कि
थोड़ा गांव का इन्वायरमेंट जो होता है दैट इज वेरी डिफरेंट। तो वहाँ बहुत सारे लोग उसके घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं कि हम देखें तो सही, रंगा चेंज तो नहीं हो गया। कि चेंज का मतलब होता है कि 6 मंथ्स वो बाहर सिटी में रहा है कि बेसिक्स तो नहीं भूल गया। तो वो सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे विलेज के। This was marriage are now quite different. What are they? Just look at the last line of the brief intro of this particular chapter. तो यहाँ पे अब लोग जो आए थे बातों बातों में जानना चाह रहे थे, and they were just making queries in front of that particular guy. They recognize the fact कि जो मैरिज के लिए उसके व्यूज चेंज हुए या नहीं। तो I think you are crystal clear about this particular intro. So I think there is no doubt in that. Ranga, accountant's son, had got the chance to go to Bangalore for education. While he had returned after getting education, automatically number of people were there in front of his house because village people wanted to know about basics of that guy. वो जानना चाहते थे कि उसमें कोई चेंजेस आए हैं। विलेज के लोग बहुत सिंपल होते हैं, उनको लगता था कि 6 मंथ्स अगर वो बैंगलोर सिटी में रहा है तो ऑटोमेटिकली कि उसके व्यू पॉइंट्स कहीं चेंज तो नहीं हो गए। तो नाउ जस्ट लुक एट द थिंग। तो मैरिज के लिए जो उसके पहले व्यूज थे क्या वही है? I think crystal clear up to this particular point. Let us start the chapter right now. Look at the same page, that is page number 16. अब हम जो चैप्टर की डिटेल में line by line और point by point we are looking at the things. Introductory part of this particular story is over. I think you are crystal clear about the introduction. तो इसके साथ ये भी बता दूं कि ये जो स्टोरी है बहुत कॉमिकल वे में लिखी गई। जो राइटर है उसने इस स्टोरी को कॉमिकल वे में लिखा है, तो बड़े ह्यूमरस वे में लिखा है। So you should be able to recognize that fact also. Now just let us begin with the first point of the content of this particular story. देखिए राइटर ने कहाँ से स्टार्ट किया है? टाइटल। अब राइटर क्या कहता है? Just look at the first point. When you see the title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha's Vivaha or Ranganatha's Vijay? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijay or Girija Kalyana. यहाँ ऑथर जो है सबसे पहले टाइटल के बारे में कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? जस्ट लुक एट द फैसिनेटिंग वे ऑफ स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जब आप देखोगे इस टाइटल को रंगास मैरिज, तो तुम पूछ सकते हो क्यों, ये क्यों नाम रखा रंगास मैरिज? क्यों? नाम तो ये भी हो सकता था रंगनाथा's विवाह और रंगनाथा's विजय। Yes, I know I could have used some other mouth-filling of one like Jagannatha Vijay. तो कुछ और भी टाइटल, फैसिनेटिंग टाइटल दे सकता था, अट्रैक्टिव टाइटल दे सकता था, जिसमें ऑथर जी कह रहे हैं जगन्नाथा's विजय और गिरिजा कल्याण। कल्याणा जो होता है साउथ इंडिया में मैरिज के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज सिनोनिम ऑफ मैरिज। कहते हैं मैं अट्रैक्टिव टाइटल। आप ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन पूछोगे जब तुम देखोगे कि कितना सिंपल टाइटल दिया है रंगा's मैरिज। तो आपको यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं कि कारण क्या है। दूसरे पॉइंट में वो वांटेड टू हाईलाइट द रीजन कि क्यों सिंपल टाइटल है इस चैप्टर का, क्यों उसने कॉम्प्लिकेटेड टाइटल चूज नहीं किया इस चैप्टर को लिखने से पहले। Now just look at this particular point, that this is not about Jagannath's victory or Girja's wedding. ये जगन्नाथ
विक्ट्री के बारे में तो कोई कहानी लिख नहीं रहा, विक्ट्री होती है जीत। ना ही मैं गिरजा की शादी के बारे में लिख रहा हूँ। तो इट इज अबाउट our Ranga's marriage and has no fancy title। तो खुद ही क्वेश्चन किया बिगनिंग में, ये टाइटल के बारे में रीडर से वो कह रहे हैं कि तुम क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तुम्हारे मन में उठेगा कि इतना सिंपल टाइटल। तो आंसर भी देखिए खुद ही दे रहे हैं ऑथर जी और नरेटर जी। आंसर क्या दे रहे हैं, तो देखिए ये कोई सेलिब्रेशन ऐसी तो है नहीं है जगन्नाथ की जीत के बारे में या गिरजा की शादी के बारे में। तो ये हमारे अपने बेटे की शादी है जो विलेज का लड़का है और हमारा बड़ा वेल नोन फैमिली का बेटा है। तो किसी भी फैंसी टाइटल की इसके लिए जरूरत नहीं है। Only simple title is more than enough to highlight this particular chapter। I think crystal clear about the second point of this particular story। First question, then answer by the narrator। पहले क्वेश्चन करते हैं नरेटर जी या ऑथर जी, फिर उसी का ही वो आंसर देते हैं कि हमारे अपने ही बच्चे की शादी है, क्या फैंसी टाइटल में क्या रखा हुआ। तो इसलिए he wanted to highlight the basic reason of choosing very simple title for this particular story। Now look at the next। It is about our own Ranga's marriage and it's not fancy title। fancy होता है attractive। So अब आगे अपने विलेज के बारे में हाईलाइट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हो कंटेंट का स्टोरी का। जिस विलेज में रंगा जी रहते थे, रंगा जी भी वही रहते थे और जो नरेटर है ऑथर है मस्ती वेंकटेश अयंगर वो भी उसी विलेज में रहते थे, वो साहली। और जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो साहली इज आवर विलेज। हमारे विलेज का नाम क्या है कहते हैं, मैं पहले पॉइंट ये क्लियर कर दूं, राइटर और रंगा both were residing in the same village। तो देखिए मैं हमारे विलेज का नाम तो साहली है, तो must have heard of it। So he wanted to highlight this particular point कि तुमने इतना फाइन विलेज, इतना प्रेस्टिजियस विलेज। तो ये पॉइंट ऐड कर देते हैं कि यू मतलब यहाँ रीडर्स को कहते हैं कि यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर विलेज। साहली का नाम तो तुमने कहते सुना ही होगा। Now just look at this particular point। No, what a। अब देखिए अगेन क्वेश्चन भी उन्होंने क्या आंसर भी वही कर रहे हैं, कहते नहीं, अगर नहीं तुमने इस विलेज का नाम सुना तो what a pity। नेगेटिव स्टेट to highlight that particular point कि इतना फाइन विलेज, इतना ब्यूटीफुल विलेज, अगर तुम लोगों ने, यानी तुम लोग कौन है यहाँ रीडर्स, अगर तुम लोगों ने इसका नाम नहीं सुना तो बड़ी दया वाली बात है, बड़ी नेगेटिव स्टेट वाली बात है। नेक्स्ट स्टेप इज बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। आगे एक्सटेंड कर रहे हैं इसी पॉइंट को ऑथर जी, रीडर्स को कह रहे हैं कि अगर तुमने इसका नाम नहीं भी सुना, ये दैट इज नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुमने इस विलेज के बारे में इस विलेज के बारे में कोई हाईलाइटिंग या इस विलेज के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है तुम्हें, तो तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। नो, नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन ज्योग्राफी बुक। किसी भी ज्योग्राफी बुक में, ज्योग्राफी बुक के किसी भी मैप में इस विलेज को हाईलाइट नहीं किया गया। तो तभी वो रीडर्स को कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये किसी भी ज्योग्राफी बुक में इस विलेज का नाम कहीं भी हाईलाइट नहीं किया गया, किसी भी मैप में इस विलेज का नाम जो है हाईलाइट नहीं किया गया। और जस्ट लुक एट द वे ऑफ राइटिंग स्टोरी, वेरी फैसिनेटिंग, वेरी अट्रैक्टिव वे। और रीडर्स से क्वेरीज दे आर आंसरिंग, I think very beautiful way of writing any story। We must appreciate the writer of the story। ये चलते हैं अब
द सेम पेज, तो कहते तुम्हारी गलती नहीं है अगर तुमने नहीं सुना, क्योंकि कोई मेंशन नहीं किया। तो नाउ जस्ट लुक एट द थिंग्स, those Sahit in England writing in English probably do not know that such a place exists, and so make no mention of it. यहाँ पे जो उन्होंने इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है, तो जरा ध्यान से समझ लेना। तो यू हैव टू लुक एट द थिंग, दोस इंग्लिश मेन, ये वर्ड किसके लिए हाईलाइट किया गया है? जस्ट लुक एट द थिंग, दोस साहित्य इन इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश राइटर्स के लिए, द पर्सन हु जस्ट राइट बुक्स इन इंग्लिश, तो उनके लिए उन्होंने ये हाईलाइट किया है, ये पर्टिकुलर वर्ड। probably do not know that such a place exists, probably होता है शायद। जिन्होंने ये इंग्लिश की बुक्स लिखी है, ये यानी जो राइटर्स है, इंग्लिश की बुक्स हो, ज्योग्राफी की बुक्स हो, यानी वो ऑथर्स के बारे में, राइटर्स के बारे में वो बता रहे हैं। तो देखिए शायद उन लोगों को जानकारी नहीं थी कि खुशहाली जैसे विलेज को हाईलाइट करना है, दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, यानी तभी कहते हैं उन्होंने उसको ऐड नहीं किया। लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, तो हाउ पीपल डू फॉरगेट अबाउट इट। तो जो हमारे अपने लोग, अपने लोग मतलब इंडियन पीपल, उस टाइम पे जब ये चैप्टर लिखा गया है, ऑटोमेटिकली books used to be written by English people only. So I think you are crystal clear about the situation before 1947. तो आप highlight कर रहे हैं, just look at the deep level of this particular point. तो कहते हैं हमारे अपने लोग भी वो भूल गए। तो I think crystal our own people do forget about it. तो हमारे own people मतलब इंडियन, वो भी इस विलेज के बारे में, उस टाइम पे एनवायरनमेंट as the people used to follow the British rules. So now just look at this particular point. Once she walks into a pit, the rest blindly follow it. So now just look at क्या इस point का यहाँ क्या मतलब है। अब यहाँ पे एग्जाम ऑथर जो है वो इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू हाईलाइट कर रहा है कि कैसे हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कैसे हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो शिप की एग्जांपल इसलिए दिया, कहते अगर एक शिप जो पिट में गिरती है, तो होती है हाइट, तो तो पीछे पूरा शिप का जो फ्लोप होता है, सब एक एक करके उसी पिट में जाती है। वो सोचती नहीं है कि जो शिप ऑलरेडी पिट में गिर चुकी है वो मर जाएगी। दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट। तो यहाँ ऑथर ये इसको हाईलाइट क्यों कर रहा है? तो इसलिए जस्ट कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग राइटर्स। अगर एक राइटर जो है, एक राइटर ने मुसाहली विलेज के बारे में मेंशन नहीं किया, तो बाकियों ने फॉलो किया उसको। तो दिस इज अ वेरी टफ पॉइंट, कीप इट इन माइंड। किसी बुक में आपको ये एक्सप्लेनेशन बेटे नहीं मिलेगा। तो हमारा पर्पस सिखाना होता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। जाओ जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन। तो यहाँ उन्होंने फ्लॉक ऑफ शीप क्यों हाईलाइट किया है? फ्लॉक, आपने ये भेड़ चाल वर्ड सुना होगा कि एक शीप जो अगर काई में गिरती है, सारा जितना भी फ्लॉक होता है शीप का, एक एक करके सारी काई में गिर जाती है। they are not able to recognize the fact कि यहाँ गिरने के बाद हमारी जान चली जाएगी। तो इस तरीके से ऑथर यहाँ पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहा है राइटर्स। एक राइटर ने मुसाहली विलेज को हाईलाइट नहीं किया किसी भी बुक में, दूसरे ने भी सोचा नहीं, तीसरे ने भी नहीं सोचा। आगे जो था दैट प्रोसेस वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन कि ऐसी जगह भी यहाँ
यहाँ हमारे इंडिया में है. So now just look at this particular point. I think crystal clear so far as this particular point is concerned. Now look at the next. तो बेटे नेक्स्ट पॉइंट में देखिए सेम पैराग्राफ में both the science in England and our own geographers have not referred to it. You cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. जो यहाँ पे कहते हैं कि जब 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 में दो कैटेगरी के लोग उन्होंने उत्तर में लिए जो उत्तर हाईलाइट किया था साहेब्स इन इंग्लैंड. साहेब्स इन इंग्लैंड यहाँ अथॉरिटीज के लिए यूज नहीं किया गया. यहाँ जो राइटर्स थे इंग्लिश राइटर अगर वो लोग भूल गए उसको बुक्स में मेंशन करना हमारे विलेज के बारे में तो नेक्स्ट पॉइंट में जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन और हमारे अपने ज्योग्राफर्स थे वो भी भूल गए. तो नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ऊपर क्या हाईलाइट करना चाह रहा है. तो हमारे अपने ज्योग्राफर्स ने भी उसको उस विलेज को हाईलाइट नहीं किया. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यू का मतलब यहाँ रीडर्स को हाईलाइट किया जा रहा है यानी कि कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि बेचारा कार्टोग्राफर. If we look at this particular word CARTOGRAPHER, cartographer बेटे क्या होता है. Cartographer is the person who draws or produces maps. वो पर्सन मैप्स ड्रॉ करता है और मैप्स को हाईलाइट करता है प्रोड्यूस करता है. दैट पर्सनालिटी इज कॉल्ड कार्टोग्राफर. शायद जो जो इंग्लिश राइटर्स थे वो भूल गए हमारे अपने इंडिया के ज्योग्राफर्स भूल गए इस विलेज को ऐड करना बुक्स में. तो कार्टोग्राफर कैसे याद रख सकते हम बेचारे कार्टोग्राफर कैसे ब्लेम नहीं कर सकते ना कि मैप में उसको रखे कैन यू. And so there is not even the shadow of our village on any map. तो कहते हैं परछाई तक नहीं है होसाली विलेज की किसी मैप में भी. यही कारण है. I think first paragraph is crystal clear. There is no doubt in this particular paragraph. So now look at the second paragraph. The same page, that is page number 16 of your snapshots. Dear students, please don't forget the books. Without books, you can never ever be able to understand the things. चलिए आगे second paragraph. Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. Author जी कहते हैं यहाँ पे he was just expressing his sense of regret और सॉरी फील कर रहे हैं. क्यों कह रहे हैं कि मैंने बिगिनिंग का चैप्टर की कहीं और पॉइंट से किया था. इस स्टोरी की जो बिगिनिंग पॉइंट था कहते हैं कुछ और मैंने लिया था एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. लेकिन चला गया मैं कहानी को लेके किसी और डायरेक्शन. That is why he was just expressing his sense of I think sorry or regret. पे वो बहुत सॉरी फील कर रहा है कि मैंने कहानी का पर्पस जो था कुछ और था. जो बिगिनिंग पॉइंट कहानी का कुछ और था मैंने कहानी की डायरेक्शन में और ही कन्वर्ट कर दिया. जस्ट लुक एट द थिंग हाउ if the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet Karigadabu is to a festive meal, then Hosahli is to Mysore state, what the feeling is to Karigada. Now just look at this particular point. Before that, you should be crystal clear about that particular point that Hosahli village is in Mysore. So you should be able to look at this particular point. So अब ऑथर क्या कह रहे हैं यहाँ पे. He wanted to highlight the significance of Hosahli village.
किस तरीके से, just look at the thing. If the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet Kari Gedabu is to a festive meal. अगर जो मैसूर स्टेट है, भारतवर्ष मतलब इंडिया के लिए कारी गडाबू की तरह, KARIGADABU, कारी गडाबू. If we look at this particular term, it is a South Indian fried sweet filled with coconut and sugar. ये बेटे साउथ इंडियन की एक स्वीट है जो कि जिसके अंदर फिलिंग की होती है किससे, कोकोनट और शुगर से. और जैसे हम गुजिया होती है ना हमारी जो यहाँ नॉर्थ साइड में होती है, ये भी उसी तरीके की तरह की स्वीट होती है. लेकिन इस स्वीट के बिना कोई भी सेलिब्रेशन साउथ इंडिया में कंप्लीट नहीं हो पाए. The author wanted to highlight that particular point कि जैसे मैसूर जो है बेसिकली, if the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet Kari Gedabu is to festive meal. कि वहाँ के जो फेस्टिव मील में जैसे कारी गडाबू की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही मैसूर जो स्टेट है उसकी इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर इंडिया. Osahli is to Mysore state what the filling is to the कारी गडाबू. लेकिन जो मैसूर स्टेट है, मैसूर स्टेट के लिए जो होसहली विलेज है वो उस तरीके से है जैसे कारी गडाबू के अंदर फिलिंग होती है. फिलिंग यानी शुगर की और कोकोनट की. उसके बिना वो स्वीट जो होती है इनकम्प्लीट होती है. If we just sum up this particular point, we will be able to highlight this particular point in a very fine order. Here the author wanted to express the importance of होसहली विलेज. वो कहते हैं कि जैसे भारतवर्ष के लिए मैसूर स्टेट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, इस तरीके से जस्ट कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टेट टू कारी गडाबू. बहुत इंपॉर्टेंट जो स्वीट होती है जिसके बिना कोई भी सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होती साउदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में. तो उसी तरीके से कहते हैं वो सहली किस तरीके से है मैसूर के लिए, जैसे कारी गडाबू के अंदर जो फीलिंग होती है वो होसहली विलेज जो है वो मैसूर के लिए वो फिलिंग की तरह है. वेरी इंपॉर्टेंट. So this particular example he wanted to highlight the